Oh, Assalamu alaikum. Sorry for the delay in the start of class. I was stuck up in some unavoidable situation. And let us see what we were discussing before the revision class last week. And we had discussed infinite sequences. And we started talking about infinite series. And you people are already uh, being taught a few things about infinite series. But I started this as a fresh topic. If you add the terms of an infinite sequence, uh, you may get a finite number that may be unique, or you may get finite results but multiple results, and you can have infinite result of the sum. In any such situation, we call it an infinite series, and our major concern is to determine the behavior of the series that we call infinite series or just briefly series, in the sense that this sum is finite and unique, in which case the series is convergent. And if the sum is finite but multiple results are possible or infinite, then we say that this series is divergent. Uh, we approach to explore the behavior of the infinite series by making another sequence. The idea is that we already know sequence कब converge होती है. We studied that sequence converges to some number L if all but a finite number of terms of the sequence are outside a small neighborhood of the limit L, and all the rest are infinitely many terms of the sequence are inside the neighborhood of L, then the sequence is convergent. We have talked about multiple limits, but we don't say that those sequences converge. And same will be case here. So what sequence we make out of the given series is the sequence of partial sums. Partial sums, first one is only uh, the first term of the original sequence जिससे कि series बन रही है. The second term of the sequence of partial sums is the sum of first two terms of the sequence जिससे कि series बन रही है. Then third partial sum contains three terms, fourth partial sum contain four terms, and so on. And nth partial sum contains uh, n terms. Now, Pn, which is given by this, approaches infinity. If n approaches infinity, then it will become an unending ending sum. And that unending sum is this infinite series. Thus, we have an infinite sequence of partial sum. So we started with an original sequence, which was just a sequence, added terms of all these terms of the sequence, and we obtain an infinite series. To explore the behavior of infinite series, that means ये sum एक number है या नहीं है, we make another sequence, and that is sequence of partial sums. And nth partial sum contains n terms. Tenth, ninth partial sum will contain nine terms. Sum of nine terms out of the first nine out of the sequence, original sequence un. And when we keep on doing that, ultimately we will have in fact p infinity, and p infinity means u1, u2 up to all terms of the sequence are added together, and that makes the infinite series.
we have now infinite sequence of partial sums. Whether the infinite series is finite or unique, that means the sum is finite or unique, the is convergent or not, has multiple sums or infinite uh, sum, in which case the series will be divergent, depends on the behavior of the sequence of partial sums. Because here we see that ये जो infinite series है, that is limit n approaches infinity of the sequence of partial sums. So we study a basic condition in which case in which is a necessary condition for any sequence, any series to be convergent. This is a necessary condition, not sufficient. कोई भी infinite series converges if you have limit n approaches infinity of sequence जिससे कि ये सीरीज बनी है वो null sequence हो, यानी n approaches infinity for the original sequence the limit is 0, और the original sequence जिससे कि सीरीज बनी है वो converges to 0 हो, इसको क्या हमने null sequence का नाम दिया था. The proof is very simple. The major step in the proof is you consider nth partial sum, you consider n minus 1th partial sum. तो nth partial sum जो है वो उसमें original sequence की टर्म्स u1 u2 up to un होंगी, और n minus 1th partial sum में u1 u2 up to un minus 1, यानी एक टर्म कम होगी. And when you take the difference of these two, so pn minus 1, तो इन दोनों pn minus 1, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसमें pn has an extra term that makes it un and pn minus 1. इस लाइन पर अगर मैं लिमिट एंड अप्रोच इंफिनिटी लगाऊं, that will be applied on pn, that will also be applied on pn minus 1. अब मैं अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है उसके nth टर्म को जनरल कंसीडर के n अप्रोच इंफिनिटी लगाऊं या n माइनस 1 टर्म को, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इस पार्शियल सम की लिमिट भी एक फिक्स नंबर होगी और इस partial sum की लिमिट भी फिक्स नंबर होगी, and we have called that p. Now this will result into p minus p, so that limit and approach infinity of original sequence जिससे की सीरीज बनी है that is 0. So just another look on the proof. हमसे कहा गया कि भाई सीरीज जो है हमारे पास कन्वर्जेंट है. अगर सीरीज कन्वर्जेंट है इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है. जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज कर रही है तो वो किसी नंबर p पे कन्वर्ज कर रही होगी. Thus for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है, ओके दैट वाज करेक्ट, उसकी लिमिट p है. तो all terms of the sequence of partial sums is within this neighborhood of small p, uh, except for the first m terms. So if we say that the sequence of partial sum has limit p, and the rest is a very simple treatment. Nth partial sum minus n minus 1th partial sum gives you un. You apply limit, so sequence pn converges to p, whether you call it pn or pn minus 1. एक टर्म पीछे से आना शुरू करें या एक टर्म आगे से जाना शुरू करें, both these limits should be the same number p, where we have seen that sequence of partial sum converges, that we have assumed that p minus p is 0, that
मीन्स ओरिजिनल सीक्वेंस, जिससे कि ये इन्फिनिट सीरीज बन रही है, उसकी जनरल टर्म की लिमिट जो है दैट मस्ट बी जीरो. दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन. यानी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो जनरल टर्म ऑफ द सीरीज विच इज अ टर्म इन द ओरिजिनल सीक्वेंस, उसकी लिमिट जो है जीरो, यानी वो सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो जीरो पे कन्वर्ज करेगा. मैंने कहा कि द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली जीरो, एंड we see that in this example जो मैंने कही भी है कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट नहीं है. हम ये शो करना चाहते हैं, तो ये शो करने के लिए सिर्फ इतना शो कर देना काफ़ी. यानी अगर डाइवर्जेंट शो करना है तो this theorem helps us in determining the behavior of the series just by taking the limit of the formula that makes the terms of the series or the terms of the original sequence. So un is n upon n plus 1. You apply limit n approaches infinity, and we see that this is 1, and this is not converging to 0. अब अगर सीक्वेंस ओरिजिनल जो है उसकी जनरल टर्म 0 पर कन्वर्ज नहीं कर रही, तो उससे बनने वाली सीरीज जो है वो भी कन्वर्ज नहीं कर सकती. अच्छा जी, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ और ऐड कर दूँ. And that example, what about this series? And what is un in this case? Un in this case is 1 over n. 1 over n, yes. Now what's the limit of this? What's the limit now? What is the limit of 1 upon n as n approaches infinity? 0. जीरो, बिल्कुल. ना थ्योरम सेज कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो फिर जिस सीक्वेंस से सीरीज बनी हुई है उसकी लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी में जीरो होनी चाहिए. मगर थ्योरम ने ये नहीं कहा कि एक सीरीज है, उसकी जनरल टर्म उठाओ, उसकी लिमिट निकालो, अगर वो लिमिट जीरो आ जाए तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी. सो वी शुड नोट हियर दैट if this is true, then the corresponding series need not be convergent. And it also doesn't say that कि अगर ये लिमिट जीरो है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी. नहीं, इट मे बी, इट मे नॉट बी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी, लेकिन अगर ये सीरीज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सीरीज का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है. अच्छा, उसके लिए जो मैंने एग्जांपल दी तो इस सीरीज की थी. वी विल लेटर सी
This sequence, this series is divergent. Uh, we can consider other examples. वो सीरीज जिसकी टर्म्स 1/n² है, उसमें जनरल टर्म 1/n² होगी, उसकी लिमिट 0 होगी. 1/n² सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है. So if a limit n approaches infinity of the general term is 0, the corresponding series may not diverge, corresponding series may converge. और जो मैंने एग्जांपल यहाँ साइड की हुई है वो दूसरे नेचर की थी कि शो दैट दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट. तो नॉट कन्वर्जेंट शो करने के लिए हमारे पास इस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे, कि अगर जनरल टर्म जो है उसकी लिमिट 0 नहीं है तो फिर ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो कंडीशन नेसेसरी है. Cauchy's general principle for convergence of an infinite series. We have seen that Cauchy principle for real sequences. Where did I see that? Yes. The Cauchy sequence or Cauchy criterion for convergence of sequence. तो जब हम सिंपल कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट ली, एक लिमिट है सीक्वेंस की और उस लिमिट का एक नेबरहुड है जिसमें सीक्वेंस की सारी टर्म्स मौजूद है, सिर्फ चंद बाहर हैं. जबकि कॉची जनरल प्रिंसिपल ये है कि आफ्टर फ्यू टर्म्स, अब जो भी टर्म्स आ रही हैं सीक्वेंस, उनके दरमियान जो डिफरेंस है that will become smaller and smaller and smaller. So if any conditions, any sequence satisfies this kind of condition, कि after some terms, finite number of 100 terms, 200 terms, 300 terms के बाद जितनी भी terms आ रही हैं, उनके दरमियान जो difference है, that is less than epsilon. That means they are very very close to. जितना आगे बढ़ोगे उतना sequence के दरमियान difference कम होता चला जाएगा. This is the Cauchy principle. And now we see the Cauchy principle for infinite series. Cauchy general principle for convergence of infinite series. अब ये थ्योरम ये कह रही है कि एक सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इट्स नाउ अ टू वे स्टेटमेंट. अगर कन्वर्ज करेगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये कन्वर्ज करेगी. इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर m, जिसके बाद आप सीरीज की p टर्म्स का सम ले लें आफ्टर फर्स्ट m टर्म. पहली 100 के बाद अगली 50 का सम ले लें. पहली 1,00,000 टर्म्स के बाद अगली 1,000 टर्म्स का सम ले लें. That sum will be less than some small number. And there is another integer involved. देखें, एक तरफ आप तो कह रहे हैं कि हम पहली 100 टर्म्स छोड़ दीजिए, उसके बाद अगली 10 टर्म्स, या पहली 1000 टर्म्स छोड़ दीजिए, उसके बाद अगली 100 टर्म्स. तो दो इंटीजर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो ये जो इंटीजर m है, दैट इज फॉर फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. उसके बाद ये जो इंटीजर है, दैट इज अबाउट next few finite terms. This few may be
10 12, or it may be 1000 or 2000. So two integers are involved. Now this is a mathematical formal language which makes us explore the nature of conversion series. Recall the Cauchy's general principle for convergence of an infinite sequence that states this, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिवाइज किया, और फिर हम पार्शियल सम nth और पार्शियल सम n प्लस pth. So partial sum Pn will be from u1, u2 up to un, and partial sum Pn plus p, Pn plus pth partial sum u1, u2, u3, un plus 1, un plus 2 up to plus un plus p. अब when I take the difference of these two, हमने कहा था रिप्लेस कर दें Sn को by Pn, Sn plus p को by Pn plus p. So we have this difference. First n cancel out due to difference sign, and the rest of the p terms are there as a result of this operation. And we see that this is less than this, which this proves the theorem. मगर ये एक डायरेक्शन का प्रूफ है. कौन सा डायरेक्शन का प्रूफ है? ये इफ है, सफिशिएंट कंडीशन है या नेसेसरी पार्ट मैंने प्रूव किया है? मैंने एक पार्ट प्रूव किया है, दूसरा पार्ट नहीं प्रूव किया है. तो this is if the series is convergent, that this condition is obtained. This here is a proof for condition being necessary. In the book, you will find that proof of condition is sufficient. So I leave it as an exercise for you to explore. Sir, what's the difference between condition is necessary and condition is sufficient? In view of this statement, जो अभी हमने डिस्कस किया, whenever we have situations like P implies Q, this is one way statement. Q implies P, that is the reversal. So if and only if means what? That it is two-way true, that P Yes, implies Q and Q P implies P is also. uh, P implies Q as well as the converse. अब इसमें देखना है कि इस स्टेटमेंट में P क्या है. P है series converges. Let me make it bold. तो इस स्टेटमेंट में सीरीज कन्वर्जेस, ये P है. What is Q? This is Q. So P implies Q and Q implies P both. तो मैंने जो अभी आपसे शेयर किया है प्रूफ ये वाला, ये P implies Q है.
यानी अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ये कंडीशन जरूर होगी। आप से जो मैं कह रहा हूँ एक्सप्लोर करने को, वो इसका रिवर्स डायरेक्शन, इसमें कंडीशन इज सफिशिएंट। इसका मतलब है अब ये जो क्यू है सही है। ये अज्यूम करेंगे और सीरीज की कन्वर्जेंस प्रूव हो। ठीक है। अच्छा आप लेट अस सी, ठीक हमने है। थोड़ी देर क्लियर। पहले, हाँ कुछ कह रहे हो? हमने कुछ थोड़ी देर नहीं पहले सर, इस, क्लियर। हाँ इस सीरीज का जिक्र किया था, और जनरल टर्म यू एन वन अपॉन एन की लिमिट लेके देखा था कि जीरो है, और हमने कहा था यू एन की लिमिट तो जीरो है, मगर दैट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। और हमने बताया था वहाँ कि हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि समीशन वन अपॉन एन जो है वो कन्वर्जन नहीं है। एलिमेंट्री बुक में लाइक मैथमेटिकल मैथड्स ग्रीन बुक ऑफ एस एम यूसुफ, इसमें शायद आपने इसका एक प्रूफ देखा हो, बट हम यहाँ पे इसको कॉची कंडीशन जो अभी हमने एक्सप्लोर की है उसके जरिए कर, to prove that this does not converge, we are assuming on contrary that this sequence converges. अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज, ये किताब का प्रूफ है, इसके बेस में, एंड यू कैन फॉलो द बुक एज वेल। तो हम कोई एप्सिलॉन देते हैं और एप्सिलॉन को हमने फॉर सर्टेन पर्पस 1/4 ले लिया, लेकिन हम लिखेंगे थोड़ी देर तक एप्सिलॉन, एट द एंड जब अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करेंगे फिर इसको वापस 1/4 रख देंगे। कन्वर्जेंस की कॉची कंडीशन जो है वो ये है कि आफ्टर फर्स्ट फ्यू टर्म्स, ले से 1000 टर्म्स, नेक्स्ट 100 और 150 टर्म्स जो हैं उनका सम जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो कितनी टर्म्स बाहर हैं और उसके बाद कितनी टर्म्स को हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद कितनी टर्म्स का सम ले रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉची कंडीशन। तो लेट अस मेक दिस, let us explore this. As we can choose n and m as per above statement, let n is equal to m and p is equal to m. अच्छा जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने m रख दिया, पहली m टर्म्स को छोड़ दिया, अब ये अगली टर्म है 1/m+1, और p की जगह हम ने क्या कहा, इस स्टेटमेंट में p की जगह m रख दें। अच्छा ये तो ओरिजिनल फॉर्म है, ये तो ओरिजिनल फॉर्म है, एन की जगह एम रखा, और अभी हमने इसके अंदर सिर्फ यहाँ पी की जगह एम रखा। तो फर्स्ट एम छोड़ दी टर्म्स और अगली एम टर्म्स जो हैं उनका सम ले लिया। अब उसके बाद जादू देखना, यहाँ पे हमने देखा कि मॉड हटा दिया, और मॉड हटाने से कुछ हमने किया भी नहीं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव नंबर्स, और ये टर्म सीरीज जो है इसकी भी टर्म सारी पॉजिटिव है, लिहाजा वो मॉड का जो है ना हमने तकल्लुफ थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मगर मज़े की बात क्या है कि मैं अगर राइट साइड देखूं, आखिरी टर्म क्या है 1/2m, अगर मैं इनमें से हर टर्म को 1/2m लिख दूं, ये m टर्म्स हैं, 1 2 3 4 अप टू m, ये m टर्म्स हैं, आखिरी वाली 1/2m है। अब अगर हर टर्म की जगह मैं 1/2m लिख दूं तो m टाइम्स 1/2m हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये सम बड़ा है या ये वाला सम बड़ा है। अगर मैं हर टर्म का डिनोमिनेटर ट्वाइस एम कर दूं, इसका मतलब हर टर्म का डिनोमिनेटर मैं बढ़ा रहा हूँ। इफ आई एम इंक्रीजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी टर्म, द टर्म इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो दैट मीन्स जब मैं इस राइट साइड में आखिरी टर्म सिर्फ 1/2 थी, लेकिन हर टर्म को 1/2 लिख दूं तो अब ये छोटा हो जाएगा। How many terms are there? There are total of m such terms. So m times 1/2m, and that gives me this. And immediately we recall that what was our epsilon? Epsilon हमने कहा था 1/4 ले लो, जबकि ये नंबर जो है ये 1/2 आया है। ये नंबर ये नंबर 1/4 से बड़ा है,
जबकि कन्वर्जेंस के लिए ज़रूरी होता है कि ये जो सम है वो छोटा हो एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन से छोटा होने के बजाय बड़ा हो रहा है। तो हमने ऑन कंट्री ये अज्यूम किया था कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। कन्वर्जेंस का मतलब ये होगा, जब कन्वर्जेंस का मतलब को हमने एक्सप्लोर किया तो पता था आपके पहली एम टर्म छोड़ के अगली पी टर्म्स का जो सम आ रहा है वो एप्सिलॉन से छोटा नहीं बड़ा आ रहा है, which is a contradiction to the Cauchy's general principle. Hence, the given series cannot converge. हमारी assumption कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है ऐसा पॉसिबल नहीं है। Then I look at a few basic results. अगर एक सीरीज U पे कन्वर्ज कर रही है, दूसरी सीरीज ऐसी है जिसमें हर टर्म को K से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये नई सीरीज है that will converge to KU, where K is any constant. It can be zero as well. It can be negative as well. That is simply a statement that tells me कि अगर एक सीक्वेंस एक सीरीज की हर टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर उसका सम u था तो अब उसका सम के यू हो जाएगा। अगर एक सीरीज u पे कन्वर्ज कर रही है और उसमें मैं एक टर्म और ऐड कर दूं, ये u1 से शुरू हो रही थी, मैंने u नॉट ऐड कर दिया, यानी instead of starting at n is equal to 1, I start at n is equal to 0. तो u नॉट अगर एक फाइनाइट नंबर है तो अब सीरीज जो है उसका सम u प्लस यू नॉट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक टर्म छोड़ दूं, n इज इक्वल टू 1 के बजाय n इज इक्वल टू 2 से शुरू करूं, तो अब जो सम है वो u प्लस 1 u1 हो जाएगा। u प्लस होगा या u माइनस होगा, इट विल बी u माइनस। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ टर्म्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दूं एक सीरीज में, या एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दूं एक सीरीज से, तो जो सम है वो अगर पहले फाइनाइट था तो अब भी फाइनाइट रहेगा। यानी सीक्वेंस अगर सीरीज अगर पहले भी कन्वर्ज कर रही थी तो अब भी कन्वर्ज करेगी। Thus, adding or subtracting a finite number of terms to any infinite series does not change the behavior of the infinite series. If it is convergent, it will remain so, and if it is divergent, it will remain so. किताब में इसके प्रूफ दिए हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रूफ्स। अगर आपके पास दो सीरीज कन्वर्ज कर रही हैं तो उनको ऐड करो टर्म बाय टर्म या सब्ट्रैक्ट करो टर्म बाय टर्म, तो सम सीरीज भी कन्वर्ज करेगी और डिफरेंट सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। Let us give you more attention to positive term series. हमने जो अभी एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं, बहुत मामूली से एग्जाम्पल्स लिए हैं, और इसमें हमने देखा कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज थी। पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब है जिस सीक्वेंस से आप सीरीज बना रहे हो उस सीक्वेंस की हर टर्म पॉजिटिव है, ऑल्टरनेटिंग नहीं है, नेगेटिव नहीं है। I can consider some examples. Uh, let me consider. सर जी जी बोलिए। सर हम जो 2 से m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर इसको इस प्रूफ में ये अगर हम 5 जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अभी आ रही है सर? हाँ यूसुफ यूसुफ बोल रहे हैं ना। जी हम जी सर। जी बोलो। जी सर, मैं बोल रहा था यहाँ हम जो 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमको, तो इसमें हाँ अगर हम 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ओ ये कन्वर्जन भाई नहीं ओ होगी? भाई ओ भाई ओ भाई, आखिरी टर्म क्या है m प्लस m। इसका? 1/2m। ठीक है, जी सर। अगर यहाँ मैं 3 की जगह हाँ m सर, कर दूं तो क्या होगा? 2m ही होगा सर। यहाँ पे 2 की जगह m कर दूं तो आई एम नॉट सही है मल्टीप्लाइंग सर, एनीथिंग समझ आ बाय गया वन मुझे। बाई टू, बट मैं
इन नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू m, इन सब नंबर्स को m ही कंसिडर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हर टर्म जो है 1/2m बन रही है. गेट इट? सही है जी सर ओके. जी। ओके. So I was saying that I can consider some examples. Uh, आपने ऑल्टरनेट सीरीज हमने देखी थी इससे पहले, सीक्वेंस, ऑल्टरनेट सीक्वेंस. मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ जिसमें -1 रेज़ टू पावर n है, और उसके बाद जो सीरीज की टर्म है वो है n+1/n. अच्छा जी, ये सीरीज क्या होगी? पहली टर्म n=1 -2, अगली टर्म n=2 3/2 पॉजिटिव, अगली टर्म n=3 पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव. नेगेटिव 4/3, अगली टर्म पॉजिटिव n=4 5/4, अगली टर्म नेगेटिव 6/5. 6/5. अच्छा, अब ये सिलसिला चलता रहेगा. अगर मैं इसमें सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहा होता तो ये सम्स में प्लस माइनस नहीं लिखा होता, बल्कि क्या लिखा होता? सर कॉमा होता बीच. कॉमा होता बीच में. ठीक है, कॉमा, 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 कॉमा. Now look at this trend. This trend as a sequence. This trend shows you what? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. कहाँ से शुरू हुआ है? -2 से, फिर 1.5, फिर -1.33, फिर पॉजिटिव 1.2, 1.25, नेगेटिव 1.2. तो नंबर एक तरफ -1 की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ +1 की तरफ जा रहे हैं. तो इस सीक्वेंस की दो लिमिट्स हैं. ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. ठीक है, इस सीक्वेंस से हमने ये सीरीज बना दी. अब हमें लगता है कुछ कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, तो कैंसिल होते चले जाएंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे. तो शायद रिजल्ट जो है, यानी ये सम जो है ये फाइनाइट आ जाए, यानी ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए. तो भाई हम पहले बता चुके हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर सकती. यहाँ जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो इसी तरह की सीरीज थी. जनरल टर्म की लिमिट लिमिट लोगे तो क्या आएगा? अब जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें इसमें जनरल टर्म क्या है? दिस इज द जनरल टर्म. इस पर एन अप्रोच इन्फिनिटी लगाओगे तो ये जो पार्ट है ये तुम्हें 1 देगा, और ये पार्ट कहेगा वो कि 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. The limit is not 0, is not approaching 0
as n approaches infinity. So this cannot converge. Why it cannot converge? जो हमने बेसिक कंडीशन अभी पहले देखी थी, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके जनरल टर्म की लिमिट जीरो आनी चाहिए, तो जनरल टर्म की लिमिट जीरो नहीं आ रही, so this series cannot converge. तो अब हम ऐसी बहुत सारी अल्टरनेटिंग सीरीज जो हैं या अल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस जो हैं वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. वी विल कम टू देम लेटर ऑन. So for the time being, focus only on the positive term series. Uh, I will require a break of 10-20 minutes. मेरे सेशन के 40 मिनट हो चुके हैं. मैं इस वक्त 15 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ और फिर मैं 40 मिनट का सेशन लूँगा. एंड बाय फॉर दैट पीरियड मैं सेशन टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ बल्कि रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ. ठीक है? आई विल बी बैक. सॉरी फॉर few minutes delay. So we were going to concentrate on positive term series. That means the sequence will not have positive negative terms. Uh, like this series, which has positive negative terms, we are focusing only positive terms series. So if we have a positive term series with all non-negative terms, that means every term is at least zero, generally possible. Then the corresponding partial sum is monotonic increasing. This is a simple result because if you consider sequence of partial sums with the nth partial sum, which will go up to not un minus 1, but un. Oh, sorry, yes, up to un, and the n minus 1th term, partial sum series ka n minus 1th term uh, will be up to up to un minus 1. And if we take the difference of nth partial sum and n minus 1th partial sum, the difference is un. And our hypothesis of our theorem says that un is greater than or equal to 0. So that means nth partial sum is greater than or equal to n minus 1th partial sum, which is basically the definition of monotonic increasing. So if we have a sequence of if we have a series of only positive term or at least 0, then the corresponding sequence of partial sums that we make to explore the behavior of the series, the partial sum sequence will be monotonic increasing. That proves the theorem. The next result for positive term series, uh, is my sound clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. The next result is that if we have a positive term series where the terms of the series are strictly positive, not like it can be at least 0. यानी 0 allowed था और negative allowed नहीं. अब हम 0 भी allow नहीं कर रहे. Now this kind of series converges if and only if the corresponding partial sum sequence is bounded above. When I discussed the monotonic sequences, we had a result that if a sequence is bounded, infinite sequence is bounded and monotonic increasing, then it will converge. So we are
adding towards that. For the time being, the result that we are discussing is that if we have a series of strictly positive terms, that will converge if and only if the corresponding sequence of partial sums is bounded above. For this, we will use that result that I mentioned. From last theorem, the sequence of partial sum corresponding to positive term series is monotonic increasing. Uh, अगर मैं अब strictly positive ले रहा हूँ, so I can say that it is strictly increasing. And we also know that a monotonic increasing sequence that is bounded above converges to its supremum. That is the theorem that I was referring, that we studied when we were studying sequences, infinite sequences. Uh, so if a sequence is monotonic increasing and as well as bounded above, it converges to its supremum or the least upper bound. So if the sequence of partial sums is convergent, then the series is convergent. Now, we have the result that sequence of partial sum is bounded above. Uh, uh, the positive term series must converge, must be convergent. Now, what we did in this para or in these lines, or the first part of the proof, is that कि हमने कहा कि एक रिजल्ट हमें ये बताता है कि इफ सीरीज पॉजिटिव टर्म है तो पार्शियल सम की सीक्वेंस जो है वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगी। और हम फिर उसके बाद हमने कहा कि हम इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को बाउंडेड अबव कंसीडर कर लेते हैं। तो चूंकि बाउंडेड अबव भी है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी है, तो इट मस्ट कन्वर्ज एंड दैट मीन्स द सीरीज कन्वर्जेस। इसका मतलब है हमने सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ की है। नाउ वी टेक द अदर पार्ट। Let this series be a positive term series that is convergent, and ये हमने convergent series की अब series की convergence जो है वो assume कर ली। इसका मतलब ये है कि corresponding sequence of partial sums converge कर रही है। When sequence of partial sum converge कर रही है तो वो किसी number p पे converge कर रही होगी। Thus, sequence of partial sum being monotonic increasing must be bounded above, and that is the converse of the previous part of the proof. Again, let me highlight P ये सीरीज कन्वर्ज करेगी if corresponding sequence of partial sum is bounded above. Oh no, तो ये P है, ये Q है। P implies Q and Q implies P. तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ से यहाँ तक हमने इसको Q की बुनियाद पे कहा कि P ट्रू है, और यहाँ हम इस पैरा में कह रहे हैं P की बुनियाद पे if it is positive term and convergent, then the corresponding partial sums की सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। और इसका मतलब ये है कि जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, partial sums की मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इट मस्ट बी बाउंडेड। सो P implies की Q हमने बाद में किया और Q implies P हमने पहले किया। Here I'm sharing a page of the book, and I'll be switching to some of the important results. They are terms.
Here we explore a necessary condition for convergence of positive term series. We know that for any convergent series, nth term uh, approaches zero as n approaches infinity. We now give another necessary condition which holds for only positive term. ये जो condition थी उसमें हमने positive term नहीं ली थी, general था condition थी, लेकिन अब positive terms के लिए consider कर रहे हैं. Prinkshem's theorem, known as if you have a series of positive monotonic decreasing terms that is convergent, then not only un approaches in zero, but also n into un also approaches zero as n approaches infinity. Note the difference of the previous result कि अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो जनरल टर्म की जो लिमिट है वो जीरो होगी एज एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी. बट फॉर ओनली पॉजिटिव टर्म सीरीज we have not only un approaches zero, but n into un also approaches zero is a necessary condition for the convergence of positive term series. That will help us in solving some of the problems, some of the examples. That means exploring the nature of the uh, given infinite series, whether it is convergent or not. तो अगर किसी भी पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है दैट विल बी कन्वर्जेंट. So now for a convergent series, we know that for any epsilon positive, पॉजिटिव इंटीजर पहले जिसको हमने m कहा था अब n कह दिया, exists such that पहली m टर्म्स छोड़ दीजिए, पहली कैपिटल n टर्म्स छोड़ दीजिए, उसके बाद अगली p टर्म्स का सम जो है दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. This is the representation of Cauchy condition for the convergence of infinite series. So let us choose m plus p is equal to n, which is greater than 2n. जितनी टर्म्स हमने पार्ट छोड़ दी उसका ट्वाइस. Sorry, this page control is a little difficult. And so I shrink the size. So let us choose the m plus p to be some number which is greater than twice the number of terms outside that are left. Now, what's the meaning of this? M is equal to n upon 2. I hope you remember from calculus the bracket function. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, इस इनइक्वालिटी को n by small n by 2, तो m जो है that will be a number integer, greatest integer, not greater than a small n by 2, and that I replace in this condition epsilon by 2. So we know that it is positive term series, so monotonic decreasing nature हमारे पास होगी, और when this sum is less than epsilon by 2, this sum should be greater than, अगर मैं इनमें से हर टर्म को un से रिप्लेस कर दूं, तो these are in fact how many terms? These are n minus m terms. So n minus m से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी every term is replaced by un in this sum, that will make left hand side equal to n minus m un, and that has to be greater than
this sum, because being a positive term, this आने वाली जो terms हैं उनका sum इससे बड़ा होगा जबकि epsilon by 2 से छोटा होगा. Now somewhere we have assumed that small n is uh, uh, can be replaced by n by 2, and then multiplying both sides by n by 2, and we see that n into un is less than epsilon. And when I approach, I consider n approaching infinity, when this number is small, less than some small number, that means the limit of this product should be 0. Now the trick here is replacing m by an integer which is not greater than n by 2. That makes this sum where every term is replaced by un. We have uh, the sum of n minus m terms uh, of size un, and that should be a contribution less than this contribution, which in turn means that this replaced by n by 2, and we have 2 cancelled out, and we arrive at the result required. Now, the proof may be tricky, but the use of the theorem is interesting. कि अगर मुझे किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज देखना है कि ये कन्वर्जेंट हो सकती है या नहीं, तो मैं सिर्फ यू एन की लिमिट नहीं निकालूं बल्कि एन टाइम्स यू एन की भी लिमिट निकालूं. अगर ये दोनों लिमिट्स जीरो आ जाती हैं एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, then if the series is convergent, then these two should be satisfied. Let me switch to another part of discussion today, and that is that I have shared, I think, before. This page we have discussed. Let us look at this example. Condition n into un approaching 0 is only necessary, not a sufficient condition for the convergence, as stated in the theorem. If n into un does not tend to 0, then the series is certainly divergent. For example, the harmonic series summation 1 upon n, जिसके बारे में अभी हम देख चुके हैं कि डाइवर्जेंट है. It diverges because it has positive, monotonic, decreasing terms, and for the possibility नहीं, ये इससे related नहीं है. I think I have missed something while copying from the book. So let us look at geometric series. मैं इस example पे दोबारा आऊँगा. Abel's series. It's not continued from the previous page. It is something different. But this Abel series, which is made from the terms 1 upon n log n, this diverges. उसकी रीज़न क्या है कि अगर मैं जनरल टर्म को n से मल्टीप्लाई करूँ तो ये n कैंसिल हो जाएगा, 1 upon log n रह जाएगा. When n approaches infinity, 1 upon log n also goes to infinity. So 1 upon n log n approaches 0. So monotonic decreasing terms सीरीज है ये, लेकिन सीरीज डाइवर्जेंट है, लेकिन ये कंडीशन जो है ये फिर भी मीट हो रही है. सो कंडीशन अब अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो ये ज़रूर होगा, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो, वो डाइवर्ज भी कर सकती है. Somewhere else we'll explore the divergence of this series separately. Case of geometric series. You are well aware of the geometric series 1 plus r square
where we are claiming that it converges when R is less than 1, and it diverges if R is equal to 1 or greater than 1. So the first case we are considering is that R 0 से बड़ा है but less than 1 है. And we have this series. And you know that from the school algebra that general sum of geometric series is given by 1 minus r raised to power n upon 1 minus r, which can be broken down into two terms. And when we consider this term, denominator is fixed. The numerator, when r is less than 1, which will be a positive number. But अगर मैं इस नंबर को हटा दूं तो एक पॉजिटिव नंबर इस सम में से जब हटा दिया जाएगा तो जो बाकी बचेगा यानी दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन दिस. नाउ व्हाट डज इट मीन? जनरल सम जो है दैट इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस r. So here what we have achieved is that this general sum sequence is bounded above and hence the series will be convergent. क्यों convergent होगी? सिर्फ बाउंडेड अबव से नहीं, बाउंडेड अबव नहीं, बल्कि व्हेन यू कंसीडर दिस सीक्वेंस, जैसे जैसे इसमें तुम टर्म्स ऐड करोगे जो रिजल्ट है वो बड़ा होता जाएगा. कभी तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव should be convergent. If you consider r is equal to 1, so what will be sequence? Sequence will be 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. अगर तुम ऐसे 1 plus 1 plus n दफ़ा लो तो सम जो बनेगा वो अगर n2 है तो सम 2 बनेगा, n3 है तो सम 3 बनेगा, n10 है तो सम 10 बनेगा क्योंकि 1 एडेड 10 टाइम. सो दैट अब जो सीक्वेंस आ रही है दिस इज नॉट बाउंडेड अबव, and it is not bounded above, hence the series is diverging to infinity. और इसमें भी जनरल सम जो है डायरेक्टली इसकी लिमिट as general sum is n approaches infinity, the general sum approaches infinity, and that is not bounded above, that is divergent. What if r is greater than 1? When r is greater than 1, इसका मतलब है अगर मैं इसको देखूं जनरल सम कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, तो अब जनरल सम जो है 1 प्लस number greater than 1 plus number squared greater than 1 plus and so on. तो इसका मतलब है सम जो है वो अब 1 plus 1 plus 1 टाइप के सम से बड़ा होगा. So for geometric series, if r is greater than 1, a term of sequence of partial sum is greater than 1 n for every integer n. Therefore, this sequence of partial sums cannot be convergent because it's not bounded above, and consequently the given series, that means this series, is diverging to infinity. Geometric series की convergence to divergence earlier classes में भी sequence के example के तौर पे discuss की जाती है, and but there the approach is different. Here we are using the properties that the sequence of partial sums is bounded. अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंस आएगी और बाउंडेड नहीं है तो डाइवर्जेंस आएगी. तो लेस देन 1 के केस में बाउंडेड आ रही है इसलिए कन्वर्जेंट होगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के केस में भी अनबाउंडेड है, और आर ग्रेटर देन 1 के केस में भी अनबाउंडेड है. दैट इज व्हाई द कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक सीरीज विल बी डाइवर्जिंग फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो अब हम वो नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं रिजल्ट इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमने रिसेंटली डेवलप की है सीक्वेंसेस के लिए. कंपेयरिंग सीरीज.
We have mentioned earlier that an important technique for testing the convergence of a series is to compare. आपने comparison test शायद पढ़ा हो. So we now discuss uh, one such series which is most frequently used for such a purpose. Before we go to comparison test, हम एक positive term series consider कर रहे हैं 1 upon n raised to power p. This is convergent if and only if p is greater than 1. Uh, this p test, this is also known as p test, और इसके जरिए हम कंपैरिजन के लिए सीरीज सेलेक्ट करते हैं किसी सीरीज के बिहेवियर को सजेस्ट करने के लिए आफ्टर एस्टेब्लिशिंग दिस कि ऐसी सीरीज पॉजिटिव टर्म जो 1 अपॉन n रेज़ टू पावर p हो, n इज एनी इंटीजर and p is some number greater than 1. This series will be convergent if and only if p is greater than 1. That means this series is convergent, then p has to be greater than 1. If p is greater than 1, this series has to be convergent. So I'll not go through the proof of this. Anyone interested can explore the proof himself. ये पेज दोबारा आ गया है. So this result is important. तो हमें इसको इस्तेमाल करना होगा later on. Although the proof is interesting, try to understand this proof. Out of the series 1 upon n raised to power p, geometric series are developed and geometric series behavior is forced onto this series, and p-test theorem, as I call sometimes this result as p-test theorem, is disproved. Comparison test. Any student of calculus and advanced calculus should be well aware of comparison test, which states that we have got two positive term series and there is a non-zero constant fixed real number independent of n, and there exists a positive integer such that as a positive integer m such that after m, यानी first m terms को छोड़ दिए, उसके बाद every term of this series is less than or equal to k times every term of this series. This is the hypothesis. What's the result? Un will converge if Vn converges, whereas if Vn is divergent and comparison of the terms is like this, so if this is divergent, something less than that, sorry, Un is divergent. Here the second part says if Un is divergent, तो जो चीज उससे ज़्यादा है, that also has to be divergent. To prove this theorem, we use the sequence of partial sum. तो एक सीरीज के लिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को हम s कह देते हैं, दूसरी के लिए हम t कह देते हैं. तो इसका nth पार्शियल सम u1 plus u2 up to un है, इसका nth पार्शियल सम v1 plus v2 up to vn है. और अगर हम पहली m टर्म्स छोड़ दें, we have what? Sn minus Sm for this series. जो डिफरेंस आएगा, m छोटा है तो फर्स्ट m टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और इन इस सम nth पार्शियल सम और mth पार्शियल सम जो है, इनका डिफरेंस जो है वो that will be the sum of the terms that start at m plus 1 then m plus 2 up to un. फर्स्ट m टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये फर्स्ट m टर्म्स का सम है, ये फर्स्ट n टर्म्स का सम है और n is greater than m. Now if every
term of u is compared with the term of v like this, then this is less than k times this is less than k times this, and so on. Un is less than k times Vn. Now, this other series has involved. This was series first, and इसके पहली अहम टर्म्स को छोड़ के जो टर्म्स का सम है, इट इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स दूसरी सीरीज के पहली अहम टर्म्स को छोड़ के, ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस कि u की टर्म्स k टाइम्स v टर्म्स से छोटी हैं, and then k times this can be written as Tn minus Tm, and that means Sn minus Sm is less than equal to k times Tn minus Tm. So from left hand side we bring Sm to the right side, Sm minus KTm. Uh, now एक टर्म बनी के टी एन से और दूसरी टर्म बनी एस एम, लेफ्ट साइड से आया और के टी एम. सो एस एम माइनस के टी एम के बारे में हम कह सकते हैं कि दैट इज स्मॉल. After, of course, first m terms, so this number is replaced by small h, so that h is in fact this number, and this is a finite quantity. Now, since this is a finite quantity, we will use this for development of the proof. So now pick up this first one, the conclusion. कि UN convergent है तो VN convergent होता है. VN convergent है, then the sequence Tn of its partial sum is bounded above, so that there exists a number B such that Tn की सारी terms जो हैं सब number B से छोटी हैं, जबकि रिजल्ट 1 जो हमने डिराइव किया था उसके हिसाब से अब Tn जो है वो B से छोटी है, लिहाजा Tn की जगह B रख दिया. So Sn is now less than or equal to k p plus h for all n after m terms. This all thing was developed after m terms. This means as Vn was convergent, Tn was bounded, so Sn is also bounded, and that means Un is convergent. Why only bounded above is considered for convergence? Because we are dealing with positive term series, and वो जो positive term series हैं, they are bound to be monotonic increasing or strictly increasing. तो वो तो already हमारे पास available है. Sn is increasing, and here we have proved that it is bounded above, and that means this. If we take Vn to be convergent, Un is also convergent. A similar argument is developed for the divergence, and I invite you to explore that yourself. There is a limit form of the sequence also. I'll not go into the proof of that, but if two series are positive terms such that limit of the ratio of general term is L, where L is a non-zero finite number, then the two series converge or diverge together. यानी ये लिमिट 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए, तो अब UN अगर कन्वर्ज करेगी तो VN भी कन्वर्ज करेगी, VN कन्वर्ज करेगी तो UN भी कन्वर्ज करेगी, UN डाइवर्ज करेगी तो VN भी डाइवर्ज करेगी, VN डाइवर्ज करेगी तो UN भी डाइवर्ज करेगी. That's the message of this limit form of the comparison test. There is a second type of comparison test, but I am not going into that, not considering that. And असल में डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो इसलिए होती हैं कि टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग, बुक एक्सरसाइजेज हों या कोर्सेज हों, वो ऐसी एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं
जिनमें कुछ सीरीज कन्वर्ज करने के लिए एक कंडीशन कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए एक कंडीशन यूजफुल होता है, किसी और सीरीज को टेस्ट करने के लिए कोई और फॉर्म जो है कन्वर्जेंस टेस्ट की वो यूजफुल होती है. But I'll be restricting to the original form of the comparison test that is given here in this theorem, and the limit form that is given in this theorem. And limit form I'm considering without proof, although the proof is simple in this case. I think I should stop here, and I'll continue my discussion from Cauchy root test, जिसको आप पढ़ चुके होंगे. यकीनन पहले we will revisit it. We will revisit the proof of this. So now I'm going to stop discussion at this stage, and next time हमने क्या करना है, हमने एक छोटा सा क्विज करना है. छोटा सा क्विज जो है that is based on the first assignment and second assignment, problem set 1 and problem set 2. मैं आपको आधे घंटे का टाइम दूंगा क्विज के लिए, and that half hour will be the first half hour of our Zoom meeting day after tomorrow. I'll give you 2 or 3 questions of the type that I have given you in problem set 1 and problem set 2, or assignment 1 and assignment 2. Now, after the actual time for the quiz is 20 minutes, and I consider 10 minutes for submission. Now, what you'll be doing or giving your answers by writing in on piece of papers, your notebooks, whatever. Take a pic of them, and आजकल फोन्स में और अदरवाइज भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आप 5-7 पिक्स जो हैं उनको कंबाइन करके एक पीडीएफ फाइल बना सकते हैं. तो यू विल, अगर आपने 2 पेजेस इस्तेमाल, 1 पेज इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छी बात है. मेरे कोशिश करूंगा मैं ऐसे सवाल ना दूं जिसके सोल्यूशन बहुत लंबे हों. 1 पेज इस्तेमाल किया है तो आप पिक भेज सकते हैं मुझे. अगर 2-3 पेज इस्तेमाल किए हैं तो इट्स बेटर कि आप उसकी एक पीडीएफ फाइल बना के भेज दें. कहाँ भेजें? मैं एलएमएस को प्रेफर तो नहीं करता, लेकिन एलएमएस यूज़ कर रहा हूँ आजकल, तो एलएमएस भेज सकते हैं आप अपने सॉल्यूशंस. एलएमएस पे भेजें तो आप ज़रूर, चाहे एक कागज़ हो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजें. अदरवाइज़ आप मेरे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस mqureshi@iba.edu.pk पे भेज सकते हैं. जो भी पीडीएफ फाइल बनाएंगे आप, या अगर आपकी पिक है किसी भी फॉर्मेट में, जेपैग में है या किसी और फॉर्मेट में, उसका नाम जो है वो रखने के लिए आपको ख़ास एक तरीका इख्तियार करना है. और वो ख़ास तरीका ये है कि फ़र्ज़ कीजिए हमारी क्लास में एक साहब हैं जिनका नाम है सादिक फ़लाँ, और उनका पीआरपी नंबर है 1437. तो उनकी फ़ाइल का नाम जो होना चाहिए वो सादिक-1437- .pdf और whatever. तो नेम कन्वेंशन जो है, इसकी वजह से मुझे सहूलत होती है. अगर आप एलएमएस पे अपलोड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ईमेल कर रहे हैं मुझे, तो ये नेम फॉर्मेट जो है ये ज़रूर फॉलो करें.
एलएमएस पे भी करें तो बेहतर है। इसको आदत बना लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एलएमएस को प्रेफर नहीं करता। असाइनमेंट जैसे ने मैं आपसे कहा है कि एलएमएस पे आपने अपलोड करने हैं, तो वहाँ तो जाने जैसी भी हो। लेकिन वेन एवर यू हैव टू सेंड मी सम ऑफ योर वर्क ऑन ईमेल, तो ये नेम कन्वेंशन जो है उसको आदत बना लें। एम आई क्लियर अबाउट दैट? Yes, Yes, sir. sir. Further instructions I will give you through WhatsApp. And after conducting the quiz, uh, I'll again have a sort of 15-20 minutes break. And in the rest of the session, I will start from Cauchy root test. I'll discuss this remaining these remaining pages um of the part of this chapter, fourth, infinite series, and then we'll come to next chapter next week, inshallah. With that, I terminate today's session. First, let me stop the recording.